Okay guys, so I'm about to rewind time some 1000 years back. Are you ready? On the count of three. One, two. Hey, what's up you guys? This is Shom and today I'm up with my vlog number 4, and today we are gonna discuss about the helmet, the one which I've received from the showroom and the one which I've purchased. So without wasting any further time, let's just get started. So this one is the helmet which I received from the showroom. It looks awesome, as you can see with ISI mark, and this looks amazing. I have not used it. I don't know, it got scratched, some scratches over here, but it is still fine. And yeah, so guys, this one is the helmet which I received from the showroom after purchasing my bike. It is cool, nice, and we'll check how it looks with the bike. This one and the one which I've purchased recently. पहनने में तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. Everything is nice about this helmet. Light weight है. Everything is good. और लुक वाइज यू कैन सी एंड जज राइट. ये दूसरा वाला तो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मैंने लिया था शोरूम से. आई आस्क्ड फॉर. अगर आप नहीं मांगोगे तो वो लोग आपको नहीं देगा, राइट. So we are gonna review these two helmets and we'll see that how it looks with the bike. दोनों साथ में पहनने में कैसा दिखता है, लगता है. And I mostly prefer this half helmet because of the comfort level also. But yeah, this one is also very good and it really protects you from the sun. I mean, when you are going outside and all, so this one is also really very helpful. So I'm gonna review both of these helmets, how this helmet looks with the bike, और देखते हैं दोनों पहनने पे कैसा लगता है, क्या फील देता है और कौन ज़्यादा अच्छा है. अच्छा तो ऑब्वियसली आपको पता नहीं है कौन है, बट या विल जस्ट चेक अप विद द बाइक कि कौन सा ज़्यादा ठीक है. सो गाइज, कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको बाइक के साथ कौन सा हेलमेट ज़्यादा अच्छा लगा है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट कीप गोइंग. अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का बिल्ड हेलमेट ढूंढ रहे हो, देन या दिस कुड बी लाइक वन स्टॉप फॉर यू. लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस फॉर द हेलमेट. सो ये मेरे को अप्रॉक्सीमेटली पड़ा था 1900 समथिंग. मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था. अभी ये शायद आपको कम में मिल सकता है अगर आप ये किसी फेस्टिवल सेल में ऑर्डर कर रहे हो तो. सो या यू कैन चेक आउट दिस ब्लू हेलमेट ऑल्सो. सो पर्सनली या आई वुड रिकमेंड दिस हेलमेट क्योंकि मुझे अच्छा लगा है. एंड या साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो. मैंने ये मीडियम साइज़ में ऑर्डर किया है. तो टॉकिंग अबाउट द कंफर्ट लेवल, मुझे ये हेलमेट बहुत सही लगा एंड पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा आपको क्योंकि कुशनिंग इज़ प्रॉपर इन अंदर से भी और बहुत कंफर्टेबल है. एवरीथिंग इज़ नाइस. और एज यू कैन सी दिस वन इज़ एक्स्ट्रा. आई डोंट नो ये क्या है, स्लाइड करने वाला या, बट ये बहुत अच्छा है. मतलब जब भी यू कैन वेयर दिस हेलमेट इन सनी वेदर ऑल्सो. सो फॉर दैट दिस थिंग इज़ गिवन हियर एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ नाइस फॉर मी. सो लेट्स चेक दिस हाफ हेलमेट. देखते हैं ये कैसा लगता है पहनने में. ये दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी मच कम्फर्टेबल और बहुत अच्छा है, लाइट वेट. और मैं ज़्यादा इसी को कैरी करना प्रेफर करता हूँ बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट एंड ऑल. पहनने में अच्छा है. लुक वाइज यू कैन सी एंड जज. You are the judges of the audience, right? So look wise it also looks awesome. You guys can see and judge. It's been a while for me and
today I'm recording this video after such a long time. So yeah, it's raining outside, and actually this video was recorded earlier, but yeah, I'm right now. So somewhere, if you like this video, then please do like and subscribe. If somewhere you like this video, then please do like and subscribe. And बाकी तो आपका प्यार है. And yeah, I'll try to make videos as soon as possible. मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं वीडियोस बनाऊंगा और मैं वीडियोस बनाता रहूँगा. Okay, so just hit subscribe button and like it. Okay, and love you all. Bye. See you in the next video.